Behind every confident child, there are loving and supportive parents. Now, we would like to invite our respected parents to share their thoughts and experience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to thank the management of Alpha English High School for giving me this wonderful opportunity to stand here and express myself. Today is a very important day. It feels like we were just dropping off our children for their very first day of school. We were very nervous. Like how our children would settle in. But our teachers, they pampered each and every student. They made each student feel comfortable. Thank you, teachers, for your patience. You really worked hard on our children. You made them feel comfortable. You made them like the stars. You made them grow from the toddlers, from the confident students. You changed their mindsets from I can't to I can. I also want to thank the management of the Alpha English High School for such a beautiful building they have built. And thank you for giving this wonderful place for our children to play and learn here. And lastly, I would like to congratulate each and every toddler, the little graduates. This is the new beginning now. And I would like to tell you that this will be your new adventure. You are stepping into like the primary section. And I pray to Allah that each and every student, you come up with flying colors. Thank you, all of you. And take care. Best of luck to everyone, every student. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am very bad when it comes to appreciate someone. And the moment when I came to know that I have to give something when it comes to appreciate the teachers, they made the child to comprehend the situations and the ABCs and the 1 to 3, which is a smaller thing for us when we become parents. But as a child, as a toddler, they don't know how to speak, how to tell, how to communicate, and how to stay in the society. And it's very difficult for them to understand things when it comes to society. But when it comes to parents give a birth to a child. But teachers, they make them understand, they make them comprehend the society, and they make them understand how to live and how to behave with other people around you. So first of all, I would like to thank the managements, the well-educated, and the teachers and the staff and the principals and all the staffs, just like in the uncle, the Gale uncle. Second thing that when I was searching a good school, जब मैं मेरे बेटे के लिए काफी अच्छा स्कूल ढूंढ रहा था, so I had many concerns in my mind कि क्या करना है, कौन सा स्कूल ढूंढना है, कौन सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से when it comes to give a better education, we need a better staff, a qualified staff, and well-educated teachers. And I had many things come around my mind, and I had get many recommendations. Later, I came to know about Alpha School. So I just investigated. I just start investigating that staff कैसा है, security कैसा है, management कैसा है. Then I came to know that management highly qualified है. If management is highly qualified, that means the teacher also highly qualified. When it comes to teachers and the other staff like supervisors and junior staff, so they are very highly qualified. So ये सब investigation के बाद, ये सब बातें करने के बाद, जब मैं मेरे ऑफिस में रहता हूँ तो काफी सुनता हूँ मैं. Being an IT engineer, working as an TCS, so it's quite difficult for us कि जब हम बोलते हैं हम कल्याण से आ रहे हैं, हम यहाँ से आ रहे हैं, so their mindset like they don't have a much qualified school and everything they have. So the moment when I just meet a client, the moment when I just talk to my client, European clients, and I got a message notification कि आपका बच्चा स्कूल पहुंच चुका है. So that makes me feel more, जहाँ पे हम संतुष्टि हमें मिलती है, हमें एक ये मिलता है कि हमारा बच्चा सेफली पहुंच गया है. ये सारी चीजें होता है जब हमारा बच्चा आके स्कूल में बोलता है कि टीचर हमें डांटते नहीं है, मारते नहीं.
जब हमें बेत खाने का जो हमारा एज होता था, जब हम बेत से मार खाते थे दूसरे स्कूल्स में, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें नहीं होती है, जिससे मालूम पड़ता है कि टीचर को पता है कि कैसा बच्चों को हैंडल करना है, कैसा बच्चों को समझाना है, कैसा बच्चों को लेके चलना है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दी जूनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ, इसमें पूरे टीम वर्क होता है, जिसमें मैनेजमेंट से लेके जूनियर टीचर्स तक, जो आंट होती है, जो ऐसा होता है, सबका उसमें हाथ होता है. सो आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू, एंड आई एम वेरी बैड व्हेन इट कम टू अप्रिशिएट समवन. सो उसके लिए माफी चाहूंगा, बट थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, एंड थैंक यू. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. The visionary management, the dedicated principal and hardworking, passionate teachers, and all dear parents. Assalamu alaikum. I am Dr. Sabah. Is really very honored to stand here as my little son Rais Haji graduates from Alpha English High School. I have seen the first-hand incredible experience what the teachers are doing in here, nurturing the young mind in Alpha English School. The focus on the moral values and the good habits and activity-based learning is really truly commendable in Alpha School. As someone who takes the home tuitions to primary students, I have observed that the Alpha School students, they consistently outperform. And when it comes to the local school, definitely the Alpha School students have their own place. In fact, they had their own against top like the Vani Vidyalaya and other schools. It's a really testament to the dedication of the teachers and the school commitment to the excellence. I'm particularly impressed with the way they have taught my son to read and write English in just senior KG school. The phonics-based approach is really working wonders, at least for my son. I have observed that he knows how to read, he knows how to write. This is really commendable, and he knows that how to make the sentences. So for that, I really appreciate, and it's really a testament to the hardworking, dedicated teachers. I'm really excited to see the future holds, and I have no doubt that the Alpha School will continue to grow, and soon we'll have education here which will be given by the best schools in the Kalyan. So I really congratulate the management for creating such a better and the secure environment in the locality. I also appreciate how the school celebrates the Islamic events like Ramzan and Eid, fostering a sense of community and love for the faith. The teachers who have truly become a second family for the children, every parent has appreciated this thing, that the teachers in Alpha School, they are like mother. So I'm not at all, as I'm a working woman, I am not much wondering okay, what is happening in the school, what I am having a trust that my son is in a good hand. So I'm really grateful to the part of the school community, and I'm confident that my son is really in a good and the safe hands. Thank you Alpha School for giving our children solid foundation for a bright future. I congratulate all the latest graduates today. May you all have a bright future. Amen. Thank you very much, everyone. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट और स्कूल के प्रिंसिपल स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया और अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका हमें मिला है। ये सही बात है, बहुत से लोगों ने ये जो बात कही कि भाई जब बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी स्कूल देखें जिसमें बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। पहली बात तो मैं मैनेजमेंट के जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेरे ख्याल से सभी से मैं सबका मेरा तारुफ है और सबको मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी 65 कंप्लीट करने जा रहा हूँ। कल्याण में हम लोग यहीं रह चुके हैं, तो वो उस हिसाब से मुझे लगा कि चलो भाई यहाँ पे बहुत अच्छा है। और हमने ऑब्जर्व किया 2 साल में कि हमारे बच्चे काफ़ी इम्प्रूव किए। और जब मेरी पोती ने बताया कि दादा ग्रेजुएशन डे है तो मैं थोड़ा शॉक हुआ। ग्रेजुएशन डे? मैं बोला बेटा शायद ये अपग्रेडेशन डे होगा। नहीं दादा ये तो ग्रेजुएशन डे है, इसको होता क्या है? तो फिर मैंने उसको उसके फादर उसकी मदर का जो कॉन्वोकेशन हुआ था पोस्ट ग्रेजुएट में, जो मेरा बच्चा MBA किया था, मेरी बहू MCOM, उनके फोटो बताया। मतलब बेटा ऐसा इनको बुला के सर्टिफिकेट दे के उनको ऑनर किया जाता है।
तो उसको खुशी हुई, बोले हमको भी करेंगे। बोला भाई देखो अभी क्या करते पता चलेगा। तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे प्री प्राइमरी के बाद ही उनको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल गया है। यानी इस अल्फा स्कूल ने हमारे बच्चों को 20 साल आगे लेके चले गए। बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस स्कूल के मैनेजमेंट को और प्रिंसिपल और टीचर्स को ये हिदायत दे और वो हमारे बच्चों पे अच्छा ध्यान दे, और अभी तक देते ही आ रहे हैं। और मेरी सब पेरेंट्स से ये भी गुजारिश है कि हमारा भी अपना जिम्मेदारी होती है कि हम स्कूल को, टीचर्स को, मैनेजमेंट को पूरी तरह कोऑपरेट करें। और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी इस तरह से प्रोग्राम होंगे और हमारे बच्चों की इज्जत अफजाई, हिम्मत अफजाई होती रहेगी। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Jazakallah khairan everyone. Thank you for your views and suggestion. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our school with success and barakah. Ameen. I invite our strongest support, Samira Madam, to sum up the program. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Respected management members, dear parents and my dear lovely students, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही खुशी और फख्र का दिन है। On behalf of Alpha English High School, I extend my heartfelt gratitude to all of you for being a part of a beautiful graduation day celebration. सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट मेंबर्स का, जिनकी गाइडेंस और सपोर्ट हमारे लिए हमेशा एक मजबूत सहारा है। I would also like to sincerely thank Dr. Shabana ma'am, Dr. Mateen sir, Dr. Tahir sir, Dr. Bashir sir, Dr. Khalid sir for their inspiring presence and encouraging words. My dear teachers, your dedication, patience and hard work have shaped this young mind beautifully. Thank you for nurturing and guiding our students with so much care and commitment. Dear parents, आपका ट्रस्ट और कोऑपरेशन हमारे लिए एक सबसे बड़ी ताकत है। आज की कामयाबी आपके सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था। And for the little graduate staff, this is just a beginning. Dream big, stay humble and keep learning. आखिर में मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। May Allah bless our students with success, happiness and a bright future ahead. Jazakallah khair. Thank you. Thank everyone. Dear parents, हमारे बच्चे उनको ग्रेजुएट गार्ड में है, तो अगर आपको स्नैप्स वगैरह लेना है यू कैन टेक द स्नैप्स विथ योर स्केल। हमने बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं, हमने वॉल ऑफ एप्रिसिएशन बनाए हैं जहाँ पर आप अपने बच्चों का फीडबैक या स्कूल को कोई सजेशन डाल सकते हैं। हमने गेस हु इज अ फेवरेट पेरेंट भी वहाँ पर लगाया हुआ है। यू कैन प्लीज गो ऑन विथ एवरीथिंग। ओके, थैंक यू।